गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज सूरज दिस साइड। और आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज आपका। देखिए, चार्जेस जो हैं, एज वी हैव लर्न इन अदर क्लासेस, चार्जेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स which are electrons, protons and neutrons, out of which electrons carry negative charge, they are negatively charged, protons are positively charged and neutrons carry no charge. In this chapter we'll deal with the nature of current. We'll get to know about what is an electric circuit. Some new concepts will be there like electric potential and potential difference, resistors, Joule's law of heating. These are some of the major topics and important topics. Ohm's law, very important, which we're going to cover in this chapter. The very first topic is electric current and circuit. Electric current. Electric current, basically electrons in motion constitute electric current. As I have told you, charges are of three types, which are electrons, protons and neutrons. Out of them, electrons are the one which are responsible for the flow of current in an electric circuit. Thus, electric current, it is basically defined as rate of flow of electric charges. When electric charges, and which electric charges, negative charges, flow in a circuit, this is called electric current. The symbol for electric current is I. This is a symbol for electric current. We'll get to know about its formula and its SI unit later. Then another important thing is electric circuit. Electric circuit. About electric circuit, we have learned in earlier classes as well. Electric circuit, it is basically a closed and continuous path in which electric current can flow easily. A simple electric circuit can be described as follows. This is electric circuit, this is bulb, this is battery, this is your key. This is a simple electric circuit. These are positive and negative terminals of battery. Thus, electric circuit can be defined as a closed and continuous path in which electric current can flow easily. देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसको क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ कहा जाता है. Thus, if you want to write the definition, it can be described as a closed and continuous path in which electric current can flow easily. Now, coming back to electric current, earlier when electrons were not being discovered, electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. जब पहले ये आपका माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स की वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसको माना जाता था कि वो आपका फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है. लेकिन बाद में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो आपका ये बोला गया दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ कंपोज्ड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन जो डायरेक्शन है करंट की, आज भी जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो आपकी ली जाती है फ्रॉम पॉजिटिव terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Direction of current, it is taken to be from positive terminal to negative terminal of the battery, and the flow of electrons is opposite to the flow of electric current. Flow of electrons is opposite to the flow of electric current, that is they flow from negative terminal to positive terminal of the battery, opposite to flow of current.
Now, as I have described you, we know the charge carried by an electron is 1.6 into 10 to raise power minus 19 Coulomb. This is the charge carried by an electron. It is 1.6 into 10 to raise power minus 19 Coulomb. Consider two bodies, one of which has excess of electrons and the other one has deficit of electrons. If we connect these two bodies with a wire, we'll see that electrons will flow from negatively charged body to positively charged body. Then we'll say that there is flow of electric current between body A and between body B. The total charge that will flow when n electrons move from body A to body B will be given by Q equals to Ne. The total charge will be given by Q is equal to Ne, where N is the number of electron and E is the charge carried by an electron. Thus, again, consider two bodies A and B, one of which carries a negative charge or it is excess of electrons and the other one is deficit in electrons. If we connect these two bodies, electrons will flow from body A to body B. Let's say n electrons flow from body A to body B, then the total charge, which is denoted by Q, is given by Q equals to Ne, where n is the number of electrons and E is the charge carried by an electron. Thus, electric current I, it is defined as charge flowing per unit time in a conductor. किसी कंडक्टर में या किसी वायर में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है in given time, that is called electric current. I is the symbol of electric current. Q is the total charge that flows from one body to the other, and T is the time in which charge flows from one body to the other. The formula for finding electric current is I equals to Q upon T. Previously we have seen that Q equals to Ne. Thus we can derive another formula, substitute Q equals to Ne in 1, we'll get I equals to Ne upon T. This is another formula for finding out electric current in an circuit when n electrons flow through a wire in time t. Now comes the SI unit. To find out the SI unit, we need to know the SI unit of charge and time. We can easily find out the SI unit of current. As we have seen, I equals to Q upon T. The unit of Q is coulombs and unit of T is seconds. Thus, unit of I is coulomb per second or ampere. Thus, the SI unit of current is ampere, after the name of the scientist Andre Marie Ampere. It is given after this unit ampere is given after the scientist Andre Marie Ampere. Now many a times ampere becomes a bigger unit. Thus we also have smaller units of current which are milliampere and microampere. Milliampere and microampere. 1 milliampere equals to 10 to raise power minus 3 ampere and 1 microampere equals to 10 to raise power minus 6 ampere. These are the units which are generally used when the amount or the value of current is very small. These are smaller units of current which are used when the current is very small in a circuit, for which ampere becomes a bigger unit. Now many times आपका क्वेश्चन आ जाता है that define unit of current.
जब ये क्वेश्चन आएगा कि यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करिए, तो आप डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर. Whenever question comes that define unit of current, you have to define 1 ampere. Now defining 1 ampere is very simple. Write the formula I equals to Q upon T. We have to define 1 ampere. Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor or a wire in 1 second. Thus current is 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. Thus, if question arises that define unit of current, you got to define 1 ampere, which is defined as current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. This is the unit of current. Now one important question that comes is how many electrons constitute 1 coulomb of charge? This is the question that many a times comes in paper. See, we have seen the formula Q equals to Ne. This is the formula for finding out the charge. Here we have to find how many electrons, how many number of electrons constitute 1 coulomb of charge. यहाँ आपको ये बताना है कि 1 coulomb charge में कितने electrons आपके होते हैं. Very simple. Here the charge is 1 coulomb. यहाँ पे charge आपका 1 coulomb है. N, we have to find the number of electrons. We know the charge on an electron is 1.6 into 10 to raise power minus 19 coulomb. आपको n की वैल्यू निकालनी है. n equals to 1 upon 1.6 into 10 to raise power minus 19 coulomb. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, that comes out to be 6.25 into 10 to raise power 18 electrons. That means 1 coulomb चार्ज, अगर आपका फ्लो 1 coulomb चार्ज है, तो 1 coulomb चार्ज में आपका 6.25 इंटू 10 टू रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इतने इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे इन अ गिवन कंडक्टर, देन विल से दैट द चार्ज इज 1 coulomb. नाउ current is measured by emitter. करंट को मेजर करने के लिए we make use of ammeter. Ammeter, it is always connected in series. What are series and parallel connections? We'll see in upcoming topics. कि series और parallel connections क्या होते हैं वो हम upcoming topics में देखेंगे. For now, current it is measured by ammeter. उसका symbol जो है वो ये है आपका. There is a big circle in which in between comes A. There is which is connected to the positive and negative terminal of the battery simultaneously. It is always connected in series and it is used to measure current. This is your ammeter. It is a device that is used to measure current in an electric circuit. Its symbol is this and it is always connected in series. Now next important topic is electric potential and potential difference. This is also one of the important topics in this chapter, electric potential and potential difference. देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए आपको पहले एक कॉमन से एग्जांपल समझना चाहिए. अगर आप जनरली अपने घर में देखें तो हमारे घर में जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं जिनमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं वो जनरली आपका हायर लेवल पे रखे होते हैं आपके घर में, और वहाँ से जो वाटर है वो आपका लोअर लेवल्स पे आपका जो है लिया जाता है. टैंक्स आर जनरली प्लेस्ड एट हायर लेवल्स सो दैट आपको लोअर लेवल या ग्राउंड लेवल पे आपको जो पानी का प्रेशर है वो आपको बेटर मिले. इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स भी हैं.
इलेक्ट्रॉन्स का भी ये नेचर है कि आपका वो फ्लो करते हैं वेयर दे आर ग्रेटर इन नंबर, हायर इन नंबर, टू वेयर दे आर लेसर इन नंबर। इलेक्ट्रॉन्स का भी सेम नेचर है कि वो आपका, जैसे वाटर का नेचर है कि वो आपका फ्लो करता है जहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो फ्लो करता है जहाँ पे उसका प्रेशर कम होता है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स का भी प्रेशर होता है। इलेक्ट्रॉन्स में भी आपका वो फ्लो करते हैं जहाँ पे वो नंबर में ज़्यादा होते हैं टू जहाँ पर वो नंबर में कम होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो रोल आता है वो आता है सेल और बैटरी का। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि जो सेल और बैटरी है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। सेल और बैटरी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते। सेल और बैटरी जो है वो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकें। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो एनर्जी है that is required for the electrons to move from one point to the other in an electric circuit, that is provided by electric cell और बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे वो आपका किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। देखिए नाउ कम्स योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्टली विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। See, electric potential, it is defined as the work done in carrying a charge. Consider a small charge plus q. कोई भी आप small charge ले लीजिए, मैंने small q ले लिया है। Small q is used to denote small charge. Consider a small charge plus q. Then we'll define electric potential. Electric potential is defined as the work done in carrying a charge from infinity to a point। किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर वन एंड सेम, दे आर सेम क्वांटिटीज, बोथ आर पोटेंशियल, बोथ हैव सेम सिंबल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल है या पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होगा वो आपका V ही होगा। Thus इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका द चार्ज इज कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। वी कैन ऑल्सो डिफाइन अगेन, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम बात करते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस में कंसिडर टू पॉइंट A एंड B एंड अ चार्ज Q एट पॉइंट A। कोई चार्ज ले लीजिए एट पॉइंट A और दूसरा पॉइंट है आपका B। इस चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। दैट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय V। इट इज़ डिफाइंड एज work done in carrying a charge from one point to the other in an electric circuit। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो दो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं आपके बैटरी के टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका कितना वर्क डन हो रहा है आपका किसी चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन हम करेंगे वो आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मैंने स्मॉल q लिया है क्योंकि चार्ज आपका स्मॉल q ही था। अगर आपका चार्ज है q, अगर आपका बड़ा चार्ज आपका फ्लो कर रहा है q फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस can be defined as V equals to W upon Q. This is the formula for finding out potential difference in an electric circuit. Now coming back to SI unit of potential difference. The SI unit of potential difference, it is very easy to find out SI unit of physical quantities if we know the SI unit of other physical quantities which make that particular physical quantity। मतलब अगर हमको बाकी physical quantities के SI unit पता है तो उस physical quantity के SI unit निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखिए we have got the formula V equals to W upon Q। We know W is work done, the SI unit of work is joule, Q is Coulomb
SI unit of Coulomb is SI unit of charge is Coulomb. Thus, the SI unit of potential difference is Joule per Coulomb or Volt. Thus, the SI unit of electric potential or potential difference is Volt after the name of the scientist Alessandro Volta. It is also given after the name of the scientist Alessandro Volta. Its SI unit is V. Now, again, if you want to define the unit of potential difference, then we got to define 1 volt. अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन यूनिट ऑफ 1 वोल्ट, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हेन इज पोटेंशियल डिफरेंस सेट टू बी 1 वोल्ट, तब आपको 1 वोल्ट डिफाइन करने, इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन 1 वोल्ट. वी नो V is W upon Q. Potential difference is 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other in an electric circuit. अगर 1 coulomb चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, देन वी से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट. दैट इट इज़ वेरी सिंपल टू डिफाइन 1 volt. Again, one potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other in an electric circuit. So students, these were your two important topics, electric circuit and electric current, and the other topics were your electric potential and potential difference. We'll